हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते होंगे रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर पीए और पीए की वैकेंसीज निकाली थी और टोटल 127 वैकेंसीज थी, जिसमें थी 60 एसपीए की और 67 जो थी वो थी पीए की। और इनकी 6 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अप्लाई करने की डेट थी। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके हैं उनको सबसे पहले फोकस करना चाहिए एक्यूरेट टाइपिंग पर, जो उनकी ट्रांसक्रिप्शन करने में भी हेल्प करेगी और उनको स्टेज 2 पर ले जाने में हेल्प करेगी। और साथ के साथ ही उनको इसके स्किल टेस्ट के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि चांसेस ये हो सकते हैं कि आपको बीच में गैप बहुत कम मिले। हो सकता है सेम डेट में हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर अलग भी हुआ तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा। इसलिए स्टेनोग्राफी की तैयारी करना अभी से बहुत ज़रूरी है। और नेचुरली दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है तो प्रोसेस भी उनकी स्लो नहीं होगी। एक रीज़नेबल टाइम देकर वो आपको नेक्स्ट टेस्ट जो है बुलाएंगे। आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि लीगल पैसेजेस भी करिए और जनरल पैसेजेस भी करिए। मेरे चैनल से, किसी भी चैनल से कर सकते हैं आप। जनरल पैसेजेस भी बहुत हैं डिफरेंट मैगजीन से, और लीगल पैसेजेस पहले भी हैं और ये मैं और भी दे रहा हूँ। इसमें आउटलाइंस जो हैं दी तो हुई हैं, लेकिन आप जिस भी आउटलाइन को अडॉप्ट करना चाहें आपके अपने ऊपर है। जो आपको कन्वीनियंट हो, जो आपको एक्यूरेसी की तरफ ले जाए, उसी को करिए। नई तब करिए अगर आपको समझ आ सके, आप उसको प्रॉपरली अडॉप्ट करके यूज़ कर सके। मेरी अगर माने तो डेली डिक्टेशन करिए, कोई सी भी करें, लेकिन उसको आप ट्रांसक्राइब ज़रूर करें, और वो भी कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करें। और प्रेफरेबली आप उसका प्रिंट लें और ख़ुद चेक करें, ताकि आपको मिस्टेक्स रियलाइज़ हों। कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है इसमें फोकस एक्यूरेसी पर होता है। आपने देखा है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक एक मिस्टेक जो है अगर हम करते हैं तो हमें पीछे की ओर ले जाती है। तो आपको केयरफुली करना है, नंबर पर नहीं जाना कि मैंने ज़्यादा करने हैं पैसेजेस, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। आप जितना सॉलिड और जितना डिटेल्ड में किसी चीज़ को कर पाएँ वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जहाँ आप समझें कि आपको मीनिंग देखना है तो मीनिंग ज़रूर देखिए, क्योंकि जब हम मीनिंग देखते हैं तो वर्ड हमारे लिए आसान हो जाता है, और उसको टेक्स्ट से जब रिलेट करते हैं तो और भी आसान हो जाता है। तो ये करने से आप अपने आप को डेवलप करते हैं और अपने आप को और कॉम्पिटेंसी में बढ़ाते हैं। तो अब मैं डिक्टेशन शुरू करता हूँ। प्लीज़ गेट रेडी फॉर डिक्टेशन ऑफ ए लीगल पैसेज। 5 seconds. Start. In view of the above details of the case, the following would emerge for consideration: whether fresh lease deed has been executed by the lessor Dr. Manjula in favor of the lessee Messrs. Raja Info Limited. If so, to what period? Whether the lease agreement is required to be registered under the provisions of the Indian Registration Act 1908, whether the correction of flat number 608 in the true copy of the will is genuine and correct one, or clause 7 of the will, flat number 606, has only been mentioned. Whether the will dated 1910-2004 executed by Dr. Manjula in favor of Dr. Baldev can be treated as will executed by Dr. Manjula. In other words, whether this document can be treated as valid will. Whether the general power of attorney is required to be registered in view of existence of clauses 4 and 5. With regard to item number 1 above, it is advised that Messrs. Raja Info Limited may verify from their records whether a fresh lease agreement has been executed between the parties. With regard to point number 2 above, it is to state that in terms of section 17(1)(b) of the Indian Registration Act 1908,
other non-testamentary instruments which purport or operate to create, declare, assign, limit, or extinguish, whether in present or in future, any right, title, or interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees and upwards, to or in immovable property, are required to be compulsorily registered. The words used in this subsection are non-testamentary, and the said words are used to refer those documents which are intended to be operative with immediate effect and to be final and irrevocable. The clause B of section 17(1) of Indian Registration Act 1908 provides that all non-testamentary instruments other than those of gifts must be registered if they purport or operate to create, declare, assign, limit, or extinguish, whether in present or in future, any right, title, or interest, whether vested or contingent, to or in immovable property of the value of 100 rupees and upwards. In this connection, it is stated that in this case, the document referred to is lease, and hence it is stated that the word lease be used in the same sense as defined in section 105 of the Transfer of Property Act, and it may be noted that the lease of immovable property from year to year or for any time exceeding 1 year be compulsorily registrable, whether may be in the value of interest created thereby. In this case, as the initial period of lease is for 3 years, extendable for another period of 3 years, the lease agreement executed initially on 11/8/1996 be compulsorily registrable document. So it is necessary to verify whether the lease agreement be registered or not. It may also be verified whether the lease agreement has been registered or not. Stop.